Hello, everyone. So here we are, UFC 296 post fight instant reaction. Yes, hello, Maring. Hello, Mohammed. Hello, Satya. Long time. Naveen, Sudhanshu. Yeah, I mean, very uh, interesting main event, दोस्तों. Yes, Tony lose this fight. को भी अपने फॉर्म में नहीं है. Well, yeah, long layoff. Leon is active, fighting back to back. तो दोस्तों आई वॉज वेटिंग फॉर द शॉन स्ट्रिकलैंड वीडियो ताकि वो शो करेंगे लाइव बट सिवाय ट्विटर पे जो कि फ़ैन शॉट्स हैं दे वॉज नथिंग बट या वन सेकेंड दोस्तों वेलकम टू दिस UFC 296 पोस्ट फाइट शो इंस्टेंट रिएक्शन ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास फाइट्स थी सम गुड फाइट सम बोरिंग फाइट ऑब्वियसली बट दैट्स हाउ दैट्स हाउ इट हैपेंस सो या स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो पहली फाइट थी इस कार्ड की उसके बारे में जॉश एमेट नॉकड आउट ब्राइस मिचेल ने ये फाइट शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट की थी ऑब्वियसली ब्राइस मिचेल इज़ ए कंट्रोवर्शियल फाइटर जो कि वो कहते हैं जो कि चीज़ें वो मानते हैं बट फिर भी आई थिंक एक इंटरव्यू आया था ब्राइस का इससे पहले कि कैसे जो गेम प्लान होगा इस फाइट के लिए वो होगा कि मैं पंचेस ना खाऊं और यही मेरा गेम प्लान होगा बस कि मैं पंचेस ना खाऊं बट वो हुआ एक पंच और ब्रूटल नॉकआउट काफ़ी देर तक आई थिंक प्राइस वाज लाइक स्टिल आउट ऑफ कॉन्शियसनेस उनके पैर ऐसे कांप रहे थे ही वाज शेकिंग जो कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता है एक आफ्टर वन नॉकआउट बट या टफ फाइट उनके लिए बट यस वेरी गुड विन बाय जॉश एमेट इस टाइम पे जहाँ पे आई थिंक उनके लिए बेल्ट के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल होगा बट फिर भी एक ऐसी बड़ी फाइट एक ऐसा बड़ा विन या आई मीन पावर इज़ रियल नो डाउट अबाउट इट सो वो थी पहली फाइट इस पूरे कार्ड की टोनी फर्गसन वर्सेस पैडी पिम्बलेट ऑब्वियसली एक फ़ैन फेवरेट फाइट थी या फ्रैंकली मैंने इससे कुछ ज़्यादा इस फाइट से कुछ ज़्यादा मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था बिकॉज टोनी फर्गसन स्लो है काफ़ी इंजरी वो झेल चुके हैं और हु नोस क्या इंजरी वो इस फाइट में लेके आए थे बट या आई एम हैप्पी कि वो फाइट में फिनिश नहीं हो पाया आई थिंक राउंड वन के बाद आई थॉट कि शायद वो ये फाइट फिनिश होने वाली है कुछ बहुत ही क्लीन पंचेस लैंड किए पैडी पिम्बलेट ने ये होने वाला है फिर से टोनी फर्गसन एक बार ये फाइट हारने वाले हैं राउंड वन के अंदर बट या फाइट आगे चली उसके बाद हालांकि पैडी पिम्बलेट थोड़े से स्लो हो गए थे सो इट्स नॉट लाइक द बेस्ट विन फॉर पैडी पिम्बलेट एंड इट्स नॉट लाइक द वर्स्ट लॉस फॉर टोनी फर्गसन इससे ख़राब परफॉर्मेंस भी दिया है टोनी फर्गसन अभी लास्ट कुछ फाइट्स में और इससे बेहतर परफॉर्म किया है पैडी ने अपनी कुछ फाइट्स में सो ओवरऑल ठीक है ओके ओके फाइट थी बट या जो मेन चीज़ थी द हेड मूवमेंट ऑफ टोनी जो कि हमेशा से एक इशू रहा है कि जब वो अपना हेड मूव नहीं करते तो हमेशा वो पंचेस खाते हैं तो यस ही वाज स्लो पंचेस वो खा रहे थे फॉर श्योर बट सम हाउ वो पूरी फाइट कर पाए सो एटलीस्ट हैप्पी कि टोनी फिनिश नहीं हुए बट या नाउ आई थिंक 7 फाइट लूज स्ट्रीक है इमेजिन उनके पास 12 फाइट की विन स्ट्रीक थी और अब वो 7 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे हैं सो क्या होगा उनके फ्यूचर के बारे में क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए विल टॉक बट येस इट वाज ए वन ऑफ द फाइट जिसके बारे में हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एटलीस्ट मैं जो थर्ड फाइट थी इस पूरे कार्ड पे वो थी शवकत रखमनाव वर्सेस स्टीवन वंडरबाय थॉमसन बहुत ही वियर्ड फाइट फ्रैंकली लगा शायद कि ये फाइट बहुत ही धीरे चलने वाली है बट बिल्कुल धीरे से फाइट को कंट्रोल किया शौकत ने बैक ली और
जस्ट शायद सेकेंड राउंड के कुछ शायद 5-6 सेकंड पहले यू नो सबमिट किया स्टीवन वंडर बाय थॉमसन को. So yeah, not the best fight obviously. The fight which basically I liked was Alexandre Pantoja versus Brendan Royval. A very nice fight. Um, a very good performance by the current champion Pantoja. Brendan again, he had some moments, कुछ moments लगा कि शायद he's doing something, but I think Pantoja was too much. I think overall, no doubt कि he win this fight. There's no doubt. There was no controversy, but it was a fun fight, frankly. मेरे हिसाब से ये जो डिवीजन है फ्लाई वेट बेंटर वेट यू विल सी द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइट्स. सो वो हुआ इस टाइम पे भी एंड आई एम श्योर आई थिंक ब्रेंडन मोरेनो फिर से शायद फाइट करेंगे अगेंस्ट पेंटोजा. बट या ओवरऑल इट वाज गुड. द मेन इवेंट ऑब्वियसली जो कि अभी अभी फिनिश हुआ है, लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कोबी कविंटन. या आई मीन इट वॉज द फाइट विच आई थॉट कि शायद एक बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होगी जहाँ पे दोनों फाइटर्स अपना बेस्ट देंगे. कोबी पहले 4 राउंड तक कुछ खास नहीं, कुछ खास आउटपुट नहीं. आई एम नॉट श्योर क्या इशू था, बट उन्होंने कहा शायद रिंग रस्ट था. ही वॉज नॉट एबल टू जो टिपिकल होता है प्लान कोबी का कि गो फॉरवर्ड, प्रेशर डालो एंड ट्राई टू विन द फाइट, ट्राई टू कंट्रोल द फाइट. बट इस पूरे फाइट में लास्ट राउंड छोड़ के इट वॉज जस्ट आई डोंट नो लाइक सो. एंड लियोन एडवर्ड्स आई थिंक उनके पास शायद मौका था ये फाइट को थोड़ा सा और स्मार्टली खेलने का. हालांकि उन्होंने बहुत ही फाइट स्मार्टली खेली, नो डाउट. बट जब भी फाइट गई ग्राउंड के ऊपर आई थिंक ही ट्राइड टू प्रूव कि ही कैन ग्रैपल. तो वो जो था कि आई विल प्रूव कि आई एम ग्रैपलिंग, आई कैन ग्रैपल, वो शायद मेरे हिसाब से जो लास्ट राउंड था वो उनको भारी पड़ा. अगर वो लास्ट राउंड में से ना करते तो शायद वो सही राउंड जीत पाते. आई थिंक अब वो लास्ट राउंड शायद वो हार गए. वो इसीलिए बिकॉज उन्होंने कोशिश की कि वो सबमिट करें कोई कमेंटर को, जो कि ठीक है, इट्स ओके. बट देयर वाज सम डेफिनेटली मिस्टेक्स. जैसे उन्होंने वो ग्रिप है वो छोड़ दी, कैसे जो वो होल्ड है उनके लेग्स का वो नहीं था, लॉक नहीं था, जो कि सब लोग कह रहे थे व्हाट मे बी यहाँ पे कुछ इशू है कि ये वाई लियोन इज ट्राइंग टू ग्रैपल. बट फिर भी ओवरऑल आई थिंक देयर इज नो डाउट कि लियोन वन दिस फाइट. बट या लास्ट के कुछ मोमेंट्स में जब लास्ट की जो राउंड था उसके जो ये फाइट एंड हुई, last 30 seconds obviously Covington was dominating the fight, not like hurting Leon. ऐसा नहीं कि Leon बहुत किसी मुश्किल में थे कि वो पंचेस खा रहे थे, but it was just like हाँ moral victory for Kobe कि जब fight end हुई तब मैं उनके ऊपर था. but apart from this there is no major कि हाँ भाई कोबी ने कुछ किया. कोबी ने बहुत ही typical वो दिया. okay, so now they are showing the video of the fight जो कि हुई. let me just see this दोस्तों, 1 minute. So Sean Strickland, Dricus du Plessis, and then I think पीछे से डिक्रेस कुछ कह रहे थे. शॉन पीछे हटे, एक बच्चे को पीछे हटाया और फिर जंप कर दिया उसके ऊपर. ओ माय गॉड. एंड देन फिसल गए नीचे शॉन. माय गॉड, आई मीन क्रेजी. आई डोंट नो किसका था ये आइडिया कि दो ऐसे फाइटर जो कि अभी फाइट करने वाले हैं उनको इतने पास बैठाओ. क्रेजी. एनीवे बट या आई मीन इतना पास बिठाना शॉन को ड्रिकस से जस्ट एक रो छोड़ के बहुत ही वियर्ड डिसीजन था यूएफसी का. आई डोंट नो व्हाई ने ऐसा किया, बट फिर भी ओवरऑल या इट वाज ऑल फन. एनीवे सो या दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट इस पूरे कार्ड के बारे में और आपसे आपके जो कमेंट्स उसके ऊपर बात करते हैं. ओके लेट्स गो. अमन भाई, बोरिंग कार्ड था ना? वेल आई विल नॉट से बोरिंग, बट हाँ इस कार्ड से थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन थी, खासकर the Tony fight, not from Tony but from Paddy कि it will be going to be a banger fight. और I thought कि Paddy ये fight finish कर देंगे. I thought कि Paddy ये fight finish करेंगे. Paddy will finish Tony Ferguson, जो कि possible था राउंड 1 के एंड तक. But yeah, that was the main fight जो कि मेरे हिसाब से yeah, I mean शवकत फाइट हमेशा फाइट ऐसी ही जाती है. स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन, ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो नहीं जाए करे टेक डाउन. बट या नॉट द बेस्ट कार्ड फॉर द ईयर. साल का आखिरी कार्ड था ये, तो हाँ आई थिंक इमोशंस आर हाई कि ये और ज़्यादा वो थी कि
expectation of this card should be a good card, but yeah, not the card was good, but the fights maybe not that good. So apart from the co-main event, I think yeah there was not much to talk about कि fight में क्या हुआ. Yeah, Bryce Mitchell definitely got knocked out. वो शायद एक एक ऐसा मोमेंट था चला कि यानी this fight is starting, this card is starting with a banger. So who knows? But yeah, scary for Bryce Mitchell. He's a good guy. कई बार कुछ उल्टी पुल्टी बातें कहते हैं बट ओवरऑल इट वाज गुड but yes now they're showing Dickus Duplessis giving his interview backstage but yeah overall I think they will fight now so yeah I mean energy I mean you need a character जो कि था कोबी कविंटन और लेकिन कोबी ने पहले 4 राउंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि क्या इशू था उन्होंने कहा कि इस फाइट के बाद मे बी इट वाज ए रिंग रस्ट इशू बट 4 के 4 राउंड इस तरीके से खेलना या नॉट द एंड फ्रैंकली उनका लास्ट चांस था बेल्ट के लिए फाइट करने का देयर इज नो डाउट इसके बाद ही विल नेवर फाइट फॉर द बेल्ट अगेन इस फाइट के लिए भी जब उनका नाम आया था तो बहुत सारे लोग इस बात को बहुत नाराज़ थे फैंस और क्रिटिसाइज कि क्या मतलब बनता है फिर से एक बार चांस देने का कोबी को जो कि 2 साल से उन्होंने फाइट नहीं की है बट यूएफसी का मन बन चुका था कि हाँ दिस फाइट विल बी फॉर कोबी कविंटन एंड नाउ लास्ट चांस वो हार गए सो व्हाट कैन वी डू व्हाट कैन कोबी डू नाउ सो ओवरऑल या मेन इवेंट अगर थोड़े से और स्मार्टली फाइट करते लियोन तो आई थिंक जो लास्ट राउंड था वो भी शायद वो आराम से जीत जाते देयर इज नो डाउट ही वाज डूइंग सो वेल सो फार बट आई थिंक ही वांटेड टू प्रूव कि हाँ ही कैन ग्रैपल ही वांटेड टू प्रूव कि हाँ आई कैन रेसल एज वेल आई कैन सबमिट पीपल तो वो शायद एक चीज़ शायद गलत थी बट ओवरऑल आई थिंक या वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय कोबी कविंटन आई वुड से अब तक का रखमना वर्सेस एडवर्ड्स वेल आई थिंक कि इस टाइम पे बिलाल मोहम्मद शायद थोड़े से आगे हैं इन रैंकिंग सो आई थिंक बिलाल विल गेट द चांस मोस्ट प्रोबेबली अगर इस सीरीज में फाइट कर रहे होते हमजा तो मे बी ही वाज नेक्स्ट बट बिकॉज हमजा हैज़ मूव्ड आउट सो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बिलाल विल गेट द चांस टू फाइट द रीमैच अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स बट आई एम नॉट श्योर मे बी उसके बाद रखमनाव फॉर श्योर ओके Josh Kakeo was the best in 2023, even better than Justin's. Well, yeah, it was just like sheer power. I mean, leg kicks से ऐसे knockouts होते हैं कि जब आपने leg kicks डाली है with full force and full contact, then you see this kind of reaction कि fighter गिर गया है उठ नहीं पा रहा brutal knockout. But punches के साथ ऐसा knockout बहुत rarely ऐसा होता है and it shows कि जो power है Josh Emmett के पास it was a real power. So yeah. Definitely a very solid knockout. But ये फाइट छोड़ के आई थिंक पूरे कार्ड में एंड ऑब्वियसली को मेन इवेंट वेरी टेक्निकल वेरी फास्ट पेस फाइट लियोन वर्सेस बिलाल होगा तो वो कार्ड का क्या होगा वेल दैट्स द होल थिंग यू जस्ट रेसलिंग बिलाल विल जस्ट डू रेसलिंग टेक डाउन एंड या इट्स गोना बी ए वेरी डिफिकल्ट फाइट फॉर लियोन और फॉर द फैंस सो या अजहर worst main event of the year. Well, yeah, I mean, see, Leon को भी cannot blame because Leon fight like this. So ये Leon का पूरा nature है कि he tried to be control, he tried to be very calculative. वो करते हैं कोशिश की रिस्क ना लिया जाए. But yeah, Kobe ने जो आज दिखाया, well, yeah, it was not expected. I thought Kobe push करेंगे Leon को to the end, round 1 से. But yeah, it was just absolutely, no energy. There was just no output. Anyway, bro, टोनी ने अपना IQ यूज़ नहीं किया 3rd राउंड में कि वो निकल सकता था क्योंकि पैडी गेस आई मीन आई एग्री लाइक अगर जो पल था वो था लास्ट राउंड पैडी वाज डेफिनेटली टायर्ड और वहाँ पे चांस था कि टोनी कैन यूज़ जस्ट क्लीन स्ट्राइकिंग maintain distance and just try to just score some punches. But yeah, it is typical of Tony's behavior, right? Like Tony was never known for his fight IQ. But yes, it was basically definitely a moment जहाँ लगा कि शायद यहाँ पे पासा पलटेगा 3rd राउंड है और जैसे लगा कि शायद थक गए हैं पैडी. It was a perfect moment. But still, what can we do?
Bilal versus Leon rematch your prediction? Well, I think it depends, right? Because मेरे हिसाब से इस टाइम पे Leon will be able to score victories, but a pure grappler like Bilal, I think fight लंबी जाएगी, fight फंस जाएगी. So maybe at some point Leon has to be very aggressive in this fight. So Bilal is a slightly better grappler than Bilal is slightly better grappler than Kobe Covington, and I think unlike Kobe जिसने आज कुछ कुछ नहीं किया, Bilal will not allow Leon to rest. और इसीलिए the Bilal fight will be an interesting fight for sure, and Leon has to definitely you know pressure forward और not take all those risks जो आज लिया. आज Leon ने जो रिस्क लिए in grappling, वो रिस्क शायद नहीं लेना चाहिए उनको against Bilal. But yeah, maybe I will prefer इस fight में Leon will win. टोनी बुरा हो गया, टू स्लो. या टोनी वाज स्लो फ्रॉम लास्ट 4 फाइट्स. लाइक जो गेम प्लान है टोनी का, इट वाज ऑल मेंट ऑफ हिज कार्डियो, हिज आउटपुट, हिज मूवमेंट्स. और बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ एज, आप कुछ भी बोल लीजिए, मूवमेंट्स आर नॉट देयर. सो मूवमेंट्स नहीं है, तो जो चीज़ें टोनी को स्पेशल बनाती थी वो थी उनकी मूवमेंट्स, उनकी स्पीड, उनका कार्डियो. और अब वो नहीं है. इट वॉज नेवर टोनी का फाइट IQ. इट वॉज नेवर टोनी की स्ट्राइकिंग बहुत ही एक्यूरेट है. नेवर. इट वॉज नेवर टोनी की ग्रैपलिंग. नो, इट वॉज जस्ट टोनी के मूवमेंट्स, उनकी स्पीड, and then he can take damage. He has cardio. Or up with age, yeah, there is no speed, there is no movement, and now people can hit him easily. It's possible. Bilal versus Leon can happen in Abu Dhabi. It's definitely possible. अभी चल रहा है हमारे पास दिसंबर, मे बी सितंबर में जब जाती है UFC in Abu Dhabi. It's possible that वहाँ पे फाइट करें Bilal and Leon, for sure. Sport fast. Press conference was entertaining than card. I agree. I mean, for the main event, yes, I would agree that press conference was more entertaining. But yeah, ऐसा होता है. I mean, इस पॉइंट पे आके जहाँ पे कोबी कमिटी के पास लास्ट चांस था फॉर द बेल्ट, आई थॉट कि ही विल गो ऑल आउट. यू नो व्हाट, मैं नहीं छोड़ने वाला, जो भी होगा मैं करूँगा. लेट मी जस्ट ट्राई माई बेस्ट. बट आई थिंक कोबी इज वांटेड मोरल विक्ट्री कि मैं बिल्कुल लास्ट तक फाइट लंबी जाए और मैं सिर्फ यू नो और जब भी फाइट हारते हैं कोबी ऑलवेज से मुझे कुछ नहीं हुआ, इट इज़ रॉबरी, आई वॉन्ट द फाइट. सो सेम थिंग आई थिंक कोबी वांटेड जो इस फाइट के लिए भी. इट वॉज नेवर टू विन द फाइट, आई गेस. ओके, वंडर बाय थॉमसन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है बिकॉज 40 years old है, उसने यंग कंटेंडर सर. आई एग्री. आई थिंक द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वंडर बॉय गॉट सबमिटेड. आई एम नॉट श्योर ऐसा पहले कभी हुआ है, और वो शायद सिर्फ 5-6 सेकेंड पहले सेकेंड राउंड से. सो अगर वहाँ पे वो अगर बच पाते तो या इट वॉज लाइक क्रेजी. बट येस, आई मीन एज इज नॉट कैचिंग अप. बट इट्स मोर अबाउट लाइक Shaukat is now getting better, right? Shaukat हर fight के बाद is getting better. He is very calm, composed. He has no um, like point to prove कि मैं faster हूँ, मैं. He just wants to finish the fight. और वो करते हैं, चाहे वो धीरे धीरे हो, चाहे वो boring way में हो. So क्या वो best fight थी for Shaukat? No. Like, but yeah, he wins. तो बस वो चाहते हैं वो फाइट वो जीत जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो कैसे भी हो. And for Thompson, yeah, I mean, he has some good moments kick wise, but I think it was obvious that Shaukat will ultimately finish the fight. There is no surprise, there is no you know a weird moment कि ये फाइट तो हार रहे हैं शौकत, या फिर ये फाइट तो शायद जीत पाएंगे स्टीवन. नो, it was always obvious कि शौकत will slowly control the fight. Yeah, if you want belt, go like Pantoja. Obviously, like Pantoja fight versus today and versus Moreno. Um, this is how you should fight for the belt, like all out, press forward, give your best. But Kobe is, I think 2 साल का ले ऑफ, आई थिंक एक बैड चॉइस थी उनके लिए, बिकॉज fighters who stay active definitely has more chances to win. He's not like he's some John Jones जो कि 2 साल के बाद वापस आए फाइट जीत जाए, right? um, yeah, bad decision to take 2 years off. I think he only wanted to fight for the belt. अगर वो एक फाइट करते बीच में यहाँ वहाँ,
जस्ट टू स्टे एक्टिव, तो शायद उनके लिए वो बेहतर रहता. बट आई गेस मेरे हिसाब से दिस इज़ लाइक द एंड फॉर कोबी कविंटन. आई गेस जब तक चैम्पियन है लियोन, ही विल नेवर फाइट फॉर द बेल्ट. और अब जो फाइट वो करेंगे तो किससे करेंगे? जो सब फाइटर्स हैं वो सब दे आर लाइक वेरी गुड फाइटर्स. एंड कोबी नेवर फाइट, कोबी नेवर फॉट ऑल दिस पीपल. ही जस्ट फॉट फॉर द बेल्ट. एंड मे बी योर his teammate uh, or his enemy now. Anyway, Leon versus Kobe ka fight ended up like Islam versus Walk. One, your view. Uh, Islam versus Walk view one was like different. जहाँ पे both fighters gave their best, right? जहाँ पे Islam had some good moments, Walk had some good moments, and then it was energy all around. Like both fighters are giving their best, and it was difficult कि ये fight कौन जीता. But for Leon versus Kobe, yeah, it was like we know ये fight जीत रहे हैं Leon. There's no doubt. It's just that आखिर में आते आते कुछ points कुछ देर के लिए कोबी ने ये fight को control किया. But yeah, it was always sure कि ये fight Leon जीत रहे हैं. So not exactly like Islam versus Volk मेरे हिसाब से तो. ओके, कोबी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा दो, सिर्फ वहीं पे जीतेगा वो, फाइट पे नहीं, स्पेशली टाइटल फाइट. या आई मीन अगर कोई फाइट थी कोबी के पास जीतने लायक, वो ये थी, बिकॉज लियोन इज़ नॉट ए ग्रैपलर, राइट? अनलाइक उस्मान, जहाँ पे हमेशा कोबी के पास एक उनकी एक कार्ड थी कि व्हाट, आई एम फाइटिंग उस्मान, ही इज़ ए ग्रैपलर, बट स्टिल ही गिव गुड फाइट. बट लियोन जो कि एक प्योरली स्ट्राइकर हैं, अगर वहाँ पे उन्होंने ग्रैपलिंग यूज़ नहीं की, प्रेशर नहीं डाला, देन ही कैन नॉट बीट एनी, कैन विन द बेल्ट एट ऑल. ये फाइट उनके लास्ट चांस था, बोथ नंबर वाइज और यू नो स्टाइल वाइज भी, कि अगर चैम्प बनते हैं मान ली बिलाल मोहम्मद विल नॉट बी डिफीटेड बाय कोबी. अगर चैम्प बनते हैं शौकत रखमनव, कोबी कैन नॉट बी शौकत रखमनव. सो ये उनका बेस्ट चांस था कोबी का ये बेल्ट जीतने का, और लास्ट चांस था, और वो अब गया. इट्स ऑन, इट्स गॉन नाउ. मुगैब सिर्फ एक अच्छा रेसलर है फ्लाई वेट में. येस, ही इज़ ए गुड रेसलर फॉर श्योर. बट आई गेस इन फ्लाई वेट डिवीजन आई थिंक द कंपटीशन इज सो टफ दैट कभी भी कोई भी चैंप बन सकता है. दिस फुल पॉसिबिलिटी. Ankalaev versus Johnny, number one contender. Yeah, I mean that fight will happen I think very soon now. I think ये फाइल बुक हो चुकी है. I'm not sure किस डेट के लिए, but yes, this fight will happen very soon. You see every time, hello bro, how are you? It's a shame that your mouth speaks more than your talent. uh, yeah, man, that's true. Kobe Covington versus Nate Diaz at UFC 300. Uh, मे बी बट या आई मीन इस टाइम पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कोबी को फिर से फाइट देखने का. आई मीन ऑल दैट वेट, ऑल दैट ट्रैश टॉक, ऑल दैट हाइप, एंड फॉर व्हाट? एंड नेट डियाज तो कोबी से ज़्यादा स्लो हैं. ही विल नॉट डू एनीथिंग एल्स एज वेल. सो no interest in this fight. Frankly, no interest in Nate Diaz fighting back in UFC also. Nate Diaz is a slower version of Kobe Covington. So it's going to be a very very slow fight. हाँ, fun के लिए fight कर लो, two legend of the sport. But yeah, there is no hope. There is no interest. Okay. अमन भाई, कोबी हैज वन मोटो, बकचोदी करो रात भर, काम करो झाट भर. Well, yeah, something like that, man. Kind of a sad story for Kobe, right? कि जब उनके पास when he had a tough opponent, वो कोई फाइट जीत नहीं पाए बिकॉज ही वॉज ए रेसलर, कोई कविंटन. और जब आज उनके पास थोड़ा ईजियर ओपोनेंट था बिकॉज ही इज़ ए नॉट ए रेसलर, ही इज़ ए स्ट्राइकर, तब he didn't pull the trigger. He was just simply slow. He was just not there. Ring rust बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, but yeah, he was just not there. What's next for Islam? Yeah, I mean that's a good question, frankly. Now he defeated Volk, he defeated once Oliveira, but मेरे हिसाब से अगर ये फाइट जीत जाते लास्ट फाइट अपनी बनील, तो चांस था. सो आई थिंक इट्स मोस्ट प्रोबेबली बिटवीन चार्ल्स एंड गेची. आई थिंक इस्लाम चाहते हैं कि ये फाइट गेची बिकॉज ही हैज़ डिफीटेड चार्ल्स ओलिवेरा, बट विल सी. इस्लाम के लिए ऑप्शंस हैं, बट नॉट डिपेंड्स कि यूएफसी को क्या पसंद है. यूएफसी वांट्स टू टेक विद चार्ल्स,
Charles definitely gonna be a slightly bigger fight than Gaethje, so maybe they'll go this route. But who knows? Timing, venue, injuries depends. But yeah, it's between Charles and Gaethje now. मेरे हिसाब से देखा जाए तो भाई क्या इस्लाम सऊदी अरेबिया के फाइट नाइट में फाइट करेगा? नो नॉट फाइट नाइट, बट या जब भी फाइट होगी नेक्स्ट यूएफसी की, बड़ा कार्ड होगा वहाँ पे डेफिनेटली फाइट करेंगे इस्लाम, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दिस विल हैपन नाउ इन मिड ऑफ द 2024, उससे पहले नहीं. बट या आई मीन दिस इज हाउ लाइफ राइट. चार्ल्स के पास चांस था फाइट करने का सेकेंड टाइम, बट ही गॉट इंजर्ड. रूमर्स थी कि शायद चांस नहीं चाहते, चार्ल्स का मन नहीं था फाइट करने का इन अबू धाबी. हु नोस, बट येस, दैट वाज द चांस. Now we don't know. Now we don't know when this fight will happen. Or agar, because Islam and Gaethje both are managed by Ali Abdulaziz, so maybe they will try ki he will try कि ये fight book हो जाए. So it's also possible. Bro, don't you think UFC should always put a match up for striker versus striker and grappler versus grappler? Cause ये mismatch fight में event में grappler. Well, इस MMA राइट, सो ऐसा नहीं यहाँ पे कोई रैंकिंग है कि भैया ये है हमारा. लेट्स मेक ए रैंकिंग ऑफ grapplers, let's make a ranking of strikers. There's only one ranking, overall fighters. So, and that's how um, MMA works. कुछ फाइटर्स हैं जो बेहतर है इन स्ट्राइकिंग, कुछ फाइटर्स हैं बेटर इन ग्रैपलिंग, एंड देन यू मेक देम फाइट. सम फाइटर्स कैन डू बोथ. सो या, आई एग्री, लाइक समटाइम्स फाइट बिकम वेरी बोरिंग एंड फैंस को मज़ा नहीं आता. बट सिमिलर वे, sometimes fans also like this kind of cross fights. Now John Jones fighting Cyril Gain was a cross fight जहाँ पे John Jones is a very good grappler and a wrestler, and Cyril Gain cannot. But वहाँ वो फन फाइट थी उस टाइम पे कि what we'll see क्या होगा, शायद Cyril Gain will knock out John Jones. So that's why. Oh yeah, Arman's KO over Benil. Yeah, I mean that was a brutal लॉस फॉर बेनील. बेनील की जो लास्ट दो लॉसेस हैं, अगेंस्ट चार्ल्स, अगेंस्ट नाउ अरमान, या वेरी वेरी ब्रूटल लॉसेस. बट या अरमान का जो परफॉर्मेंस था, इट वाज जस्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस. आई मीन जो हम बात कर रहे हैं इनके बारे में कि कैसे ही इज़ द फ्यूचर, ही विल बिकम द चैम्पियन वन डे, और ये जो परफॉर्मेंस था इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर वेटिंग फॉर फ्रॉम Arman Surkain. The exactly same performance. So very happy for Arman for sure, but very sad for Benil as well. This guy was supposed to fight for the belt, got injured. Just bad luck. और आई होप ऐसा ना हो, बट लग रहा है शायद कि धीरे धीरे ही वो बनने वाले हैं दूसरे टोनी फर्गसन. आई होप मैं गलत हूँ. आई होप कि वो कुछ फाइट्स जीते. आई होप कि वो बाउंस बैक करें. But injuries, age, everything is not coming for him. So difficult for him to see now fighting with the belt, for sure. Shaukat, good wrestling, but he is nasty on the ground. He's very good. I agree. I agree. So now Dana White is speaking, दोस्तों, और उनसे पूछा गया कि व्हाट अबाउट कोई कमिटेड परफॉर्मेंस. वो कह रहे हैं कि कोबी 35 ईयर्स ओल्ड, लास्ट चांस था, और जो पेस था वो नहीं था कोबी के पास आज, एंड ही मेड सम वेरी पुअर चॉइस इन द गेम प्लान. या, सो या, Dana White is saying there was a chance for Kobe and he just missed the chance. Poor Kobe, case of Kobe and Conor is same. Trash talk between. Man, don't compare Kobe with Conor, brother. Brother. Conor has become double division champ, defeated the champ, right? So don't compare Kobe with Conor from the point of, yeah, trash talking you can, but not for the action, because Conor का जो achievements है, they are far bigger than Kobe's, in my opinion. Kobe least takedown attempt in the fight against Leon. For the first 3 rounds, he did not attempt to take down. Yeah, वो एक issue definitely था, streaky. For some reason,
the speed was not there for कुछ तो था कि ring rust, game plan क्या था या इट्स a pressure of Leon, सब कुछ मिला के maybe. So but yeah, 3 rounds were definitely Leon, no doubt. Fourth as well, अगर आप देखें तो. Uh, for Arman, I think I'm waiting for this week's ranking. But let me check अभी ranking क्या है. So if I go for ranking, um, so now we have Arman on number fourth. So frankly, अगर मेरे बस चले तो I will book Arman versus Dustin Poirier. That's the fight to book. Book Arman versus Dustin Poirier, so that either Dustin is back in the mix or Arman is going to fight next. If Charles is fighting Islam, maybe even Gaethje versus Arman. But I know for a fact कि Gaethje will not fight now anyone apart from belt. So it's just Justin Poirier. अगर Poirier को लगता है कि I have one more fight in this division, he can fight Arman. Yeah. Anyway, Bryce Mitchell को केओर को टॉप 5 मिनट्स टॉक वो या आई मीन वो मिर्गी वाला जो दौरा था इट वाज लाइक वेरी स्केरी कि हुआ क्या या यू सी नॉकआउट यू सी पीपल गेटिंग बकल्ड एंड चिकन डांस बट 5 मिनट तक इट वाज जस्ट ब्रूटल सो या वन ऑफ द वर्स्ट नॉकआउट फ्रॉम पावर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर श्योर दिन डाउट दोस्तों I was so hyped for the Makachev Kobe now, but not, yeah, it will never happen, man. And frankly, Makachev will eat Kobe. अगर fight होती भी है, Makachev will destroy Kobe Covington now, no doubt. Kobe versus Conor at 300. No, I think Conor versus Chandler will happen mostly 300. मेरे हिसाब से देखा जाए तो, because that fight is almost done now. देखते हैं fight वो कब उसका आएगा, report कब आएगी, but the fight is almost a done deal. Okay, so last 5 questions and then we'll just end this live instant reaction. But yeah, overall, I would say कि bad performance by Kobe Covington. Last chance उनके पास था and he lost. And now he'll never fight for the belt again. Um, the best fight happened in the crowd जब Sean Strickland and Dickress Duplessis came to blows. वो best fight थी outside the ring. Co-main event, amazing. I love the co-main event for sure. Pantoja once again is the champion. Paddy Pimblett defeated Tony Ferguson. Not the best fight for Tony. Not the worst fight for Tony and not the best fight for Paddy. But this is the fight जो कि ऐसा fight होनी ही थी. Yeah. Shaukat Rakhmanov defeated Stephen Wonderboy Thompson. Not surprised. One more win for Shaukat. But yes, overall card, fun card, I would say. But yes, जो मेन इवेंट था डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड ओवरऑल. दिस इज व्हाट इट इज. लास्ट कार्ड था इस साल का जो तो था होना वो हो चुका है. सो वी कांट डू एनीथिंग. Kobe is lightweight, not welterweight, no power, submission only. Yeah, I mean, he says he can fight 155 pound division because he knows का जो होता है weight cut वो बहुत बड़ा नहीं है. But he's done now. I think he will never fight with the belt again. I think he will do some more bigger fights like fun fights and. That's it. Alex versus Topuria prediction. Frankly, दोस्तों, अगर आप मुझे सवाल पूछते वोटिंग बिफोर इस्लाम वर्सेस वोल्क फाइट, मैं बोलता एलेक्स. नाउ दैट ब्रूटल नॉकआउट, I would I would predict maybe Topuria, frankly, because वो जल्दी वापस आ रहे हैं उस बड़ी लॉस के बाद. सो अगर वो 6 महीने और ऑफ लेते तो आई थिंक उनके लिए बेहतर रहता. But now I think it's coming back too soon. I would suggest, I think this fight will be Topuria favored. Chandler versus Josh Emmett lightweight, too much fun. Well, Chandler will fight Conor most probably UFC 300 या 301 में. But yes, all fights are fun with Josh Emmett now. Edwards versus Bilal. Islam versus Charles. Yeah, this could be the next Abu Dhabi card. Islam versus Charles. Edwards versus Bilal. And then Arman versus Justin. I agree. Mohammad Fazen. Very, very good matchmaking, brother. Very good matchmaking. Dricus is trying to be badass. He's trying hard, man. जब से उन्होंने जो टाइटल शॉट मिस किया है अगेंस्ट Israel, he is trying very hard कि he'll do some badass, he'll do some trash talking, he'll do something, crazy. काफ़ी कोशिश कर रहे हैं. Let's see क्या होगा.
ड्रिकेस ट्राई कर रहा है एक बडेस बनने की, बट ही नीड्स टू काम डाउन, लो गैस टैंक एंड वन वर्किंग नॉस्ट्रिल. शॉन विल ईट हिम. ड्रिकेस ट्राई कर रहा है बडेस बनने की. वेल आई थिंक ही फिक्स हिज नॉस्ट्रिल, जो कि आया था न्यूज़ में कि एक था नॉस्ट्रिल खराब था. आई थिंक दे हैव फिक्स्ड इट, सो ही इज़ बेटर नाउ. बट आई एग्री, ही इज़ ट्राइंग टू गेन सम फैंस, ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि लोग उनके बारे में बातें करें, हम बातें करें उनके बारे में, और यू नो वो रहे इन द लाइमलाइट. We see the relentless takedown attempt in Masvidal fight for Kobe. I think it was the worst performance for Kobe for sure. पिछले 5-6 फाइट में देखा जाए तो worst performance by Kobe. Um, but again, maybe the leg kicks were also working, right? जो leg kicks throw कर रहे थे लियोन, तो वो भी काम कर रही थी. It's not like उनका bad performance था. Leon was also putting pressure. Leon was also throwing leg kicks and he was also very technical, जो कि Kobe नहीं थे. So yeah. कोबी रिटायर हो जाएगा. वेल नॉट इमीडिएटली, बट ही विल फाइट मी 1 or 2 times, बट आई थिंक मे बी विल नेवर सी कोबी फाइट फॉर द बेल्ट अगेन. वो जरूर पॉसिबल है. बट या ही विल फाइट अगेन हियर एंड देयर, मे बी फॉर फन. जॉश वर्सेस चैंडलर, बॉम्ब्स ऑल अराउंड. या for sure. Josh has to then jump one division, man. Josh is 145, so it's a jump one weight division. ओके दोस्तों, ये था हमारा इंस्टेंट रिएक्शन फॉर UFC 296. काइंड ऑफ मिक्स कार्ड. अच्छा कार्ड था, बट मिक्स फाइट्स ओवरऑल. या वी हैव स्टिल हैव आवर चैम्पियन बोथ. लियोन defending his belt, Pantoja is still the champion. Shaukat Rakhmanov moving up in the division for sure, defeated Vanderbilt Thompson. Paddy Pimblett defeated Tony Ferguson, and then yes, Josh Emmett defeated Bryce Mitchell. दोस्तों थैंक यू सो मच. ये था हमारा इंस्टेंट रिएक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. टेक केयर. बाय बाय. लास्ट क्वेश्चन, टोनी शुड रिटायर. टोनी शुड हैव रिटायर्ड तीन फाइट पहले दोस्त, मेरे हिसाब से. आई एम नॉट श्योर व्हाट ही इज वेटिंग फॉर, बट यस, टोनी शुड रिटायर नाउ. अगर वो नहीं करें तो मे बी डेना वाइट विल रिटायर हिम, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके. Drickus Noodle Arms Duplessis even got smacked outside the cage before the temple 5 times. Yeah, looks like that. जो वीडियो अभी रिलीज हुई थी, it looks like कि yeah, Sean landed some heavy punches on Drickus Duplessis. Alright दोस्तों, thank you so much for your time. मिलते हैं next time. Take care. Bye bye. Thanks Inspiration X. Thanks Bhaktaraj. Thanks Mohammed Fazan. Thanks Tiki. Thanks Maismal Islam. Thanks El Drago. Thanks Odin. And thanks UFC Every Time. Thanks Balang Balang. Thank you. Thanks everyone दोस्तों. Take care. Bye bye.